Hi Parv, how are you? हेलो आशीष भैया। आई एम ग्रेट। आप कैसे हो? Good, good. So, hello everyone. Welcome to our new channel, Curious CA. We'll be introducing today Parv Jain with all of you. He's a rank holder. He got his rank 8th in this attempt, May 22 attempt. So, very congratulations, Parv, on this achievement. It's a big achievement. थैंक यू। How are you feeling? And must be, I know it's a great feeling, but like in your words, how is it? डेफिनेटली। सो ये है कि एक्सपेक्टेशंस तो डेफिनेटली किसी को होती नहीं है, एंड देन रिजल्ट वाले दिन यू गॉट एन एआई रैंक। घर वालों के लिए तो एक काफी खुशी का माहौल था। रिलेटिव्स में भी काफी सब बहुत खुश हुए। घर में भैया है, उन्होंने सीए के लिए स्टडीज करके देख रखी है, उनके लिए भी Okay. काफी एक गुड न्यूज था कि मेरा भाई एआई लेके आ गया, छोटा भाई। सो ही वाज रियली हैप्पी, रियली रियली हैप्पी। मुझसे ज्यादा तो मेरे भैया खुश हुए होंगे। एंड Really. मेरे लिए तो डेफिनेटली इट वाज अ रियली गुड न्यूज कि एआई आ गया। So thank you, Parv, for this. But let me just give a brief introduction about Parv. He's like, I met him on LinkedIn, and he's literally a very nice guy. He just on my one अरे ask came up with this that yes, I'm available for the recording at whatever time, whatever place you want. He's available, and like he was very generous on this. So really, thanks for that. And then I think academically and otherwise also he's really brilliant. I would say I've seen his marks in CA Inter as well, and otherwise also his marks were absolutely excellent. So really, I don't know how he's doing this. So my first अरे question before starting this video to him was also the same, that bhai, tell me before the meeting what is the secret of this. So really excellent work from you, Purv. So before starting the video, like coming to the tips and everything, so I would just like to tell everyone your marks as well. So I've just noted it. So in accounts, you got 82, costing like just 94, and which is like 92। like I think रियली गुड। the checker was very, very जेनरस। generous there. So law you got 74. No, but in law it's like excellent. Like it's getting 74 is like you did it beyond it. डेफिनेटली। Then tax अरे as well you got 78. So group one 78। was almost, I think. रियली Uh, गुड। then advanced accounting you got 79. Audit you got 73, and EISSM I think थोड़ा सा कम हो गया 68। 68. FME को also marginally different 67। 67, but still overall you got A rate. I think because of these last two subjects it's 8, otherwise you would have been in, I think, even अरे so like still I think nothing to worry, but you got a year and you got it in first attempt. That's even a bigger achievement. So congratulations again, and let's without discussing, and let's start with the tips and discussion rounds. So one thing which is more important for me is as a when I think as a student and when I'm talking to you, I would first thing comes in my mind is what is the fuel? What is the energy that gives you this much energy that you want to study this much, you want to get an year? So is there any particular fuel, any motivation that gives you to study whole day, whole night like that? And what's that? So definitely being in the CA intermediate, there were lots of times you were like you don't want to study anymore. You need breaks. You're like छोड़ देते हैं यार, अब नहीं पढ़ा जा रहा। एक ही चीज को like there are 9 months, but in those 9 months you have to keep revisiting those subjects. You have to keep revising those subjects. So that is a hectic task definitely, and बहुत motivation की जरूरत पड़ती है। Right. फॉर मी द मोटिवेशन वाज माय पेरेंट्स, डेफिनेटली हैव टू से कि क्योंकि मम्मी थे जो बोलते थे कि पढ़ ले पढ़ ले। लाइक भैया भी थे, डेफिनेटली भैया भी थे। पापा यूज्ड टू बी लाइक नॉट मच, बट मम्मी एंड भैया ने काफी कुछ जो एक्सटर्नल मोटिवेशन का जो फैक्टर था उनसे ही कम्प्लीटली आया है। एंड जो इंटरनल मोटिवेशन था वो अपने आप कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ रहते थे। दोस्त बोलते थे कि उनका इतना हो गया है, तो उनको देख लगता था कि ओह उनका इतना हो गया है, आई नीड टू कवर ऑल्सो। अलग अलग कोचिंग में थे क्योंकि हम, सो वो कॉम्पिटिटिवनेस में भी काफी कुछ कवर हो गया। एंड उसके कारण एक फ्यूल हमेशा ओवर द इयर्स रहा। सो फ्रेंड्स से मुझे एक चीज याद आती है कि फ्रेंड्स इज लाइक एवरीवन सेज कि माय फ्रेंड वांटेड टू डू समथिंग एल्स,
I wanted to do this. They were in colleges, they were hanging around. Since you have just cleared your like 12th and just CPT would have been done in Mm. your initial days. Like it's just 1 year, you have just cleared your 12th and such a big responsibility of clearing with such good marks. Like, weren't you distracted with those friends that they are hanging around, they're having some good times in college and everything? So wasn't that very distractive or low of time? Kind of FOMO भी होता था. Like there are a lot of friends used to like every week you will check the Instagram or you will check. They would put up snaps of they are going to new restaurants every week. They are roaming with the friends. They are going out for tours and travels, not just domestic tours. They are going international tours. Definitely एक अंदर से फीलिंग आती थी कि यार हम क्या कर रहे हैं यहाँ लाइफ में बैठ के बस पढ़ रहे हैं दिन भर. वो लोग वहां Yes. पे असली लाइफ जी रहे हैं. बट एट द एंड इट वाज वर्थ इट कि बैठ के थोड़ी पढ़ ली. दे आर परस्यूइंग कोर्सेज जो कि कॉलेज कोर्सेज ही है, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज जो फ्रेंड्स नहीं परस्यू कर रहे, वही ये सब बाहर घूमने का उतना करते हैं. बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं मेरे साथ जो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स हैं, वो सबके सब मोस्ट ऑफ पढ़ाई पे ही फोकस रहते हैं. सो एक वैसा एक्सट्रीम लेवल पे फीलिंग तो नहीं आई थी, बट कहीं ना कहीं अंदर अंदर लगता था कि थोड़ा हमें भी एंजॉय करना चाहिए. एंड उसको ओवरकम करने के लिए हम दोस्तों ने अपना ही प्लान बना रखा था कि शाम को हम लोग खेलने चल जाते थे, फुटबॉल Okay. खेलते थे या फिर वॉक पे चले जाते थे या बैडमिंटन खेल लेते थे. सो दैट यूज्ड टू ओवरकम दिस थिंग कि हमें फोमो तो फील नहीं हुआ एटलीस्ट. Okay. So you used to play something and alongside. Okay, that's यस. good. That's good. So usually what students do is they don't play or they just keep themselves in a room packed. So you think it is not good. डेफिनेटली दिस इज एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट दैट कॉस्ट जो कि स्टूडेंट्स पे आ जाता है ड्यू टू दिस थिंग कि वो लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से खुद को पूरा ही कट कर लेते हैं. लाइक सोशल मीडिया बंद कर दिया, बाहर घूमना बंद कर दिया, दोस्तों से बातें करनी बंद कर दी. इससे एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग माइंड में बिल्ड होने लगती है. डेफिनेटली मैंने भी एक्सपीरियंस किया था फाउंडेशन के टाइम पे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उस टाइम कोविड था एंड और Mhm. कोई ऑप्शन ही नहीं था. लाइक Right. फ्रेंड्स से उतनी बातचीत होती नहीं थी एंड Mm-hmm. बाहर जाने का तो डेफिनेटली उस टाइम पे नहीं होता था. तो एक नेगेटिविटी दिमाग में बहुत बार आ जाती थी. बट धीरे धीरे लाइक फ्रेंड्स से बात करनी स्टार्ट की, फ्रेंड्स ने भी शेयर किया कि उनके साथ भी ये सब चीजें थी, तो एक ग्रुप जैसा बन गया. उसके कारण काफी एक मोटिवेशन रहा थ्रू आउट इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन ऑल्सो. फाउंडेशन के एंड एंड में वो एक ग्रुप बन गया था एंड इंटरमीडिएट में वो ग्रुप पूरा साथ में था एंड डेफिनेटली उसका काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा. सो आई वुड से कि ये जो पूरा कट ऑफ कर देने वाली चीज है, ये कभी नहीं करनी चाहिए. यू हैव टू बी ओपन टू योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. थोड़ा एंजॉय करना इज इम्पोर्टेंट. So I see आपका friends circle काफी अच्छा है. Otherwise also like is was it already decided by you that in your 12th or before 12th also that you will be pursuing CA, or was it your friends who told you about CA and then you decided? As you mentioned that your bhaiya is also CA, so was it him who encouraged you to do this course or something else? एक्चुअली टेंथ के बाद जब कॉमर्स लेने का डिसीजन पे आया था, सो उस टाइम मैं चेक कर रहा था कि व्हाट आर दी करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू मी इफ आई टेक कॉमर्स. सो एट दैट टाइम जो सबसे बेस्ट कोर्सेज जो मुझे लग रहे थे, वन ऑफ दोस वाज सीए. डेफिनेटली सीए की वैल्यू है, सीए में नॉलेज है, एक Right. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी कर देता है कि आप आगे कुछ भी करो तो उसमें आप इसके ऊपर और भी चीजें सीख सकते हो. सो डेफिनेटली Correct. वो एक काफी एक इंपॉर्टेंट चीज थी. उसके अलावा भैया भी थे जो उस टाइम सीए स्टूडेंट थे, अभी भी भैया एक्चुअली परस्यू कर रहे हैं. तो उनको देख के भी लगता था कि हाँ यार इंटरेस्टिंग कोर्स है, ज्वाइन कर लेना चाहिए. सो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया 11th के अराउंड में, 11th के एंड तक आते आते एक दिमाग में बन चुका था कि अब 12th में करने के बाद अपने सीए कर ही लेंगे. गुड टू हियर दैट यू हैड इंटरेस्ट, और वो भी देखने के बाद, बिकॉज समटाइम्स पीपल से कि हम तो वो देखते हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं वैसे. बट गुड गुड यू ऑलरेडी सॉ दैट एंड देन यू डिसाइडेड कि मेरे को ये करना है. सो रियली गुड टू हियर दैट. सो कमिंग टू द मेन टॉपिक्स, लाइक जो स्टूडेंट्स वगैरह सुनना चाहते होंगे, ये तो हम वी आर डिस्कसिंग, बट पर्सनल. स्टूडेंट्स वांट टू मोर हियर फ्रॉम यू इज how did you use to prepare your notes, like were you preparing some, and how was your coaching going on? Did you took all the coachings, 8 subjects, or you took some coaching and then came to some self study, and then like how was your mix and how did you studied? ओके. सो कोचिंग के रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे 8 सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग ली थी डेफिनेटली, क्योंकि Okay. इंटरमीडिएट में सेल्फ सेल्फ वो परस्यू करना एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता है कई बार. अगर मैं खुद से Mm-hmm. जाता तो आई न्यू कि मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होके कुछ सब्जेक्ट्स को ओवर इंपॉर्टेंस दे देता और बाकी सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं मिस आउट कर देता. इसके लिए Right. कोचिंग डेफिनेटली हेल्प मी.
एंड कोचिंग के साथ साथ जो एक नोट्स वाली बात पे आ जाते हैं, नोट्स लाइक जो थियरी सब्जेक्ट्स होते थे उनमें नोट्स बनाने की जो इंपॉर्टेंस है वो पेपर के टाइम पे जब क्लोज आता गया, लाइक सेल्फ स्टडी का जब स्टार्ट होने लगा, क्लासेस चल रही थी, तब नोट्स की इंपॉर्टेंस, नोट की जो काम है उतना नहीं आया था। बट राइट। जैसे जैसे फुल पोर्शन टेस्ट की टाइम आ गया और सेल्फ हम्म। रिविजन का टाइम आ गया, जब पेपर का टाइम आ गया स्पेशली, हम्म। तब रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ नोट्स बना लिए थे टीचर जब पढ़ा रहे थे साथ साथ में। क्योंकि वो जब नोट्स को देखते थे ना, कई सारे कंसेप्ट दिमाग में रिफ्रेश, मतलब जो राइट। कंसेप्ट उड़ गए होते हैं लाइक ओवर द टाइम, काफी टाइम से देखा नहीं, वो नोट्स देखने से दिमाग में क्लिक हो जाता था। एंड उसके राइट। कारण काफी टाइम बाद भी जब मैंने खोल के नोट्स देखे, तो वो टॉपिक्स दिमाग में आ गए फिर से, यस। एक ग्रिप बनी रही। सो नोट्स से रिलेटेड एक और पॉइंट होता है कि यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैं नोट्स बुक्स में ही बना लूं, लाइक इफ आई एम रेफरिंग टू अ बुक ऑफ पर्टिकुलर टीचर तो उन्होंने बुक दी हुई है, शुड आई प्रिपेयर दोस नोट्स इन दैट इटसेल्फ, मोस्टली थ्योरी में, because practical में तो you have your separate notebook itself for your solutions and everything, but still if you think that there is a not a separate notebook and you have the book of your teacher, so would you prefer making notes in books itself or would you make your notes in a separate notebook? तो मैं अगर नोट्स की अगर बात करूँ, पर्सनली मैं एक अलग नोटबुक मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मुझे Okay. पता है कि वो नोटबुक मैं एंड तक रख पाऊंगा अपने पास, इसके लिए मैं अलग रखता हूँ। बट जो Mm-hmm. टीचर्स हैं हमारे भी, Mm-hmm. एंड वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप बुक में ही बना लो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है कि वो बुक कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो गई। मेरे साथ भी हुआ था कि एक दो बुक्स जो थी लास्ट में नहीं मिल रही थी, Mm-hmm. काफी ढूंढना पड़ा लेकिन वो मिल गई। बट अगर बुक में है तो उस टाइम ये रियलाइज हो कि अगर मैंने जो मैम के बुक्स हैं, जो टीचर के जो नोट्स हैं उसमें बना लिए होते तो ये इशू नहीं आया। बट Right. इधर वे, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो आपके पास जब आपको जरूरत हो वो आपके पास हो। Yes, yes. So that's a generally what I've seen is कि students अगर books में ही notes बना ले, until and unless you want a complete summary of your book, तो उसमें बनेगी नहीं. But if you want to jot down some important points, तो उसी के पास note कर लो, तो it becomes easier to revise. वहाँ पे आप अपने की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू रिवाइज द नेक्स्ट टाइम यू रिवाइज ओनली दोस की पॉइंट्स. सो आई थिंक दैट्स a really good point from you. Now I think you also mentioned about your tests. You were giving some tests, so just to inform, like I'm also taking some tests from students, mostly inter and final both. So we are taking tests from students like block wise and full syllabus as well. So how do you think, like, was it important to give these test series when you gave it, or was it okay if you didn't give it? And like in your rank, did it help you to improve those marks, or was it like, what's your take on these test series? सो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से वाज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं पेपर में अच्छे से लिख के आता हूँ। लाइक पेपर के पहले दो फुल पोर्शन टेस्ट हो रखे थे, तो आइडिया था कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो हमारी मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, Right. कि मैं क्या करूंगा उस टाइम पे। सो उस पेपर ने, फुल पोर्शन टेस्ट पे Hmm. पर्टिकुलरली, उसने काफी Hmm. हेल्प किया। अदर देन दैट, ओवर दी पूरे साल में यूनिट वाइज टेस्ट भी होते रहे, उसका Hmm. भी काफी हेल्प रहा। एंड जो ब्लॉक वाइज टेस्ट, लाइक एक पर्टिकुलर एक महीने दो महीने में जितना कवर हुआ है वो लोग टीचर्स ही खुद Right. शेड्यूल कर देते थे, एंड आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आपको देना ही था Yes. टेस्ट, ऐसा टीचर बोल देते थे। सो वो Hmm. टेस्ट के कारण एक जो रिविजन, जिसमें मैं Correct. आलस कर देता करके टेस्ट नहीं होता, बट टेस्ट था, तो ये रिवीजन करने के लिए जो एक मोटिवेशन फैक्टर, ये जो डेडलाइन फैक्टर आ गया, तो उसके कारण एक रिवीजन के लिए एक बूस्ट मिल गया। एंड डेफिनेटली अगर मुझसे पूछोगे तो टेस्ट सीरीज इज 100% नेसेसरी, टेस्ट सीरीज तो देना ही है। Yes, yes, I agree, because starting of this was, the purpose of this was only this, that students क्या करते हैं, directly professional exam में जाके बैठते हैं, which they don't know how the environment is there, how the checking will be there, how ICA is going to evaluate there. There are a lot of questions on Google that how ICA evaluates, how is this done. So the this gives you an environment where you can check yourself how ICA, like obviously any teacher won't check it completely as per ICI, but it's like 95% to 105% similar to that. So what happens, you have a good advantage of that. So I think students should appear for test series. Even ICI takes mock test before their actual exam. So even if you think that you cannot afford some test series from outside or somewhere else, you cannot rely on them. You should at least go for ICI test series so that they give you a good. Otherwise, also, even if you think that is even not possible for you, there are a lot of free tests available on Google. Go search for it. You will get some good tests.
appear for them, check yourself and evaluate yourself. That will give really a good advantage to you. So good point that yeah, test series is very important to you. And like some students think that language is also a barrier for them. Like some say that they are not able to recall the exact language what ICI quoted in their books. So do you think what was your take? Did you mugged up the complete language from ICA manuals, or was it like you just learned the meanings and everything and then tried to recall as much as possible and then framed it in your words? So this particular thing about the language, it's not just, it is a really big issue definitely, क्योंकि जो नवंबर में मेरे friends हैं who are going to give paper, they call me and they are like, theory subjects में कैसे याद रख लिया भाई, हम अभी Right. like, for them the subjects are just starting out. So Yes. audit and EIS is the group 2 subjects which are majorly theory part. So it is starting out right now and they are like कि याद ही नहीं हो रहा, क्या करें, तूने कैसे याद किया था, like they are asking for strategies. And the only thing that I would recommend to every person who is thinking कि completely mug up करना पड़ेगा या फिर ये language पे grip नहीं आ रही है, Mm-hmm. as number of times you revise is really important. जितना Okay. ज्यादा रिवाइज करोगे, ग्रिप उतनी स्ट्रांग होती जाएगी. एंड देन आपको अलग से लैंग्वेज पे वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज आपके अंदर समा चुकी होगी काइंड ऑफ. लाइक Right. आप बोलोगे भी ना, आप वो लैंग्वेज अपने आप बोलने लग जाओगे. लाइक Mm-hmm. आपने 2 to 3 टाइम अगर रिवाइज कर लिया Mm-hmm. उसी चीज को, एक ही Mm-hmm. चीज को, दैट विल फॉर्म अ गुड बेस जिसपे आप फिर बस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप पकड़ लोगे ना, then you Right. can write it just as same as the book में जैसा लिखा हुआ है. So that was my strategy कि मैंने repeated revisions लिए थे in theory subjects, जिसके कारण पेपर में भी वो exact language तो नहीं कहूंगा but similar language लिखने में काफी हेल्प हुई, जिसके कारण Okay. theory subjects में मार्किंग काफी decent मिल गई. So how many revisions did you took? Like 4, 5 revisions, 2, 3 revisions, and what is an ideal mix of revisions? Like what do you think? How many revisions should be done? 5, 10, 20, whatever. Like what do you feel? So मैंने personally एक बार चैप्टर वाइज जब रिवाइज हुआ था, दैट वाज माय फर्स्ट रिवीजन कि एक एक चैप्टर करके जब मैम कराते जा रहे थे. सेकेंड टाइम रिवीजन जब वो ब्लॉक वाइज टेस्ट हुए थे, उस टाइम ही हुआ था सेकेंड टाइम रिवीजन. थर्ड टाइम रिवीजन वाज फुल पोर्शन टेस्ट. वो Okay. जो एक चैप्टर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद देयर यूज्ड Hmm. टू बी अ फुल पोर्शन टेस्ट. दैट वाज द थर्ड रिवीजन एंड देन 2 full paper tests बिफोर द एक्चुअल पेपर, and then one more full portion revision that was exactly one day before the papers. So one day before. So it went like 6 revisions for me, particularly in my case. Hmm. But for any student who is going to appear for examination, at least you have to go for 3 revisions, because until and unless you go for 3 revisions, the language wouldn't form, you wouldn't get a strong hold of the language. Right. So I would recommend at least 3 revisions for any student who is watching this or जो भी जिनका पेपर आने वाला है या फिर जो भी preparations कर रहे हैं आगे के papers के लिए. At least 3 revisions is a must. Yeah. So I think good point. 3 revisions. I think even if possible, like time permits, go for more because more and more revisions is good. But there also you should really think of that how much you grasp from that revision. It should not be that you are just reading the books and Mm-hmm. nothing goes into you. Like don't run behind the number of revisions, but go behind the quality as well. Like 3 revision is, I think, Quality, yes. a very good number. Like a person can manage 3 and with a good quality as well. So good number you have just suggested that 3 revision is really good. So also like I feel what I feel is I study 1 or 2 subjects, like mix of 2 subjects. Like I generally used to do theory and practical on a single day. Like when I used to feel bored of theory, I used to pick up practical subjects, so I'm a bit out of that boredom. And sometimes when I'm feeling bored of practical as well, so I used to study Mm. some theoretical parts so that I'm changed of my mind. So how was your strategy for this? Like you used to study one paper or like multiple? Means I used to take exact same strategy, but it used to be like 2 theory and 2 practical subjects. Okay. Because for me, only 2 subjects, two gets boring. Mm-hmm. So I used to have 4 subjects in a day Okay. during the self-study part. And Mm-hmm. उसके कारण काफी theory में बोर मारने लगा, shift to practical. Practical में बोर मारने लगा, दूसरी practical उठा लो, नहीं तो फिर दूसरी theory उठा लो, फिर उसमें Yeah. बोर मारने लग जाता. Then you have another option. उसके कारण at least mind stable state में रहता था कि हाँ पढ़ते रह रहे हैं. Mm-hmm. बोर मारने के कारण पढ़ाई को छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे थे, बस सब्जेक्ट चेंज हो रहा था. Okay. Okay. And while giving your tests, we were discussing about tests. So while giving your test, was how was your score in those tests? And did you feel any time that you are not able to score well, or even
like marginally less, that teacher said that it's Mhm. not good. So was there sometime like that, and sometimes any negative thoughts? How do you deal those negative thoughts? सो पर्सनली क्या हो रहा था ना, लाइक ईआईएस एसएम एंड ऑडिट जो पर्टिकुलर ये दो सब्जेक्ट्स थे, Mm-hmm. इसके जब चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, लाइक Yeah. जस्ट मैम ने करवाया चैप्टर एंड देन उसके फ्यू डेज में एक टेस्ट शेड्यूल की जाती थी। तो Okay. उन टेस्ट में आई यूज टू बी नॉट एबल टू कंप्लीट द रिविजन। तो उसके Mm-hmm. कारण काफी टाइम ऐसा लगता था कि लाइक चैप्टर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे पेपर के टाइम पे। एक दिन में ये पूरे के पूरे कितने 13 चैप्टर्स हैं पूरे ऑडिट में, लाइक 13 चैप्टर्स हैं। वो एक दिन में कैसे कर पाऊंगा, आज एक चैप्टर नहीं हो पा रहा है मेरे से, Mm-hmm. लाइक वो एक काफी नेगेटिव थॉट उस टाइम पे बिल्ड हो जाता था। एंड जो पेपर्स होते थे उसमें भी आई डोंट थिंक मेरे उतने बढ़िया स्कोर आते थे जब वो चैप्टर वाइज टेस्ट थे, क्योंकि वो रिविजन नहीं थी उस टाइम पे। बट Okay. जैसे जैसे रिविजन बढ़ती गई आई रियलाइज कि हाँ यार हो जाएगा, पेपर के टाइम हो जाएगा। तो Yes. So डेफिनेटली I think स्टार्टिंग में स्कोर again a काफी। key point here is for me also that test series gave you a boost, that you were able to complete it, and then that gave you a boost for revision as well. So you were able to do multiple revisions, and at the final day, those revision time reduced to some extent, and then you were able to complete it in 1.5 days. So revision, multiple revision, that two combined with some tests or some self testing as well इवेल्युएशन टाइप। would help you. Yeah, self evaluation will help you. So I think really good to talk you. I also read your LinkedIn profile, Parv. So I saw there were multiple activities you were performing. So tell us some extracurricular activities you were performing during your 12th or even your, इंटरव्यूज। yeah. सो पर्सनली मेरा इंटरेस्ट रहा है इन द टेक्निकल फील्ड। जैसे कि एक्सेल यूज करना हो गया, एक्सेल के बारे में, Hmm. एक्सेल में काफी एक इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी थी। लाइक Okay. ट्वेल्थ के टाइम पे भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था रिगार्डिंग टू एक्सेल एंड अदर दिस टेक्निकल स्टफ, जो कि Hmm. एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड से उतना रिलेटेड नहीं होता। बट आई यूज्ड टू फील लाइक कि हाँ यार ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ काफी कुछ किया जा सकता है। Okay. सो टेक्निकल स्किल्स में काम करने की हमेशा से लाइक क्यूरियोसिटी रही है कि अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। सो अभी भी लाइक एक डेटा एनालिटिक्स लाइक का कोर्स है जो कि मैं परस्यू कर रहा हूँ, Okay. कोर्सेरा पे अवेलेबल है, वो मैं कर रहा था। एंड उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए लाइक मैं यूट्यूब पे वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखता रहता हूँ कि लाइक जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए या फिर स्टैंड अप कॉमिक्स हो गए, उनके जो स्किल्स पर्टिकुलरली देखने के लिए कि ये लोग कैसे इंटरेक्ट कर लेते हैं बिना डरे विद सच अ लार्ज मास, सच अ लार्ज क्राउड। वो स्किल्स पे काफी क्यूरियोसिटी है और उस स्किल्स पे भी काफी फोकस करने का प्लान है अभी। I think those skills are completely being reflected in your current interview as well. I see your करेक्ट। confidence in it, and the smile and the way you are talking is completely commendable. So really, that's already थैंक यू सर, being थैंक यू। reflected here. So don't worry about that. And I think you'll be rocking in your coming days, in your interviews and everything. I think you will be already um appearing for some interviews for your articleship as well. So hope for the best, and you will of course be landed at your. From that, I would ask one more question from you. What are you expecting in your articleship? Like some particular area, or you are looking up for some stat audits or some niche area? What's your now take? सो टॉकिंग अबाउट आर्टिकलशिप, मेरे दो फील्ड ऑफ प्रेफरेंस मैंने जो डिसाइड करके रखा है कि इन फील्ड में अगर काम करने के लिए काफी Hmm. इम्प्रूवमेंट होगा पर्सनल के लिए भी और आगे मेरे स्किल्स के लिए भी। सो टैक्सेशन फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है मैंने, लाइक Okay. कॉर्पोरेट टैक्सेशन या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन के फील्ड में अगर Hmm. मिल जाए आर्टिकलशिप, दैट वुड बी रियली ग्रेट। एंड ऑन दी सेकंड प्रेफरेंस मैंने स्टैट ऑडिट को डेफिनेटली रखा है, क्योंकि स्टैट ऑडिट में जितना नॉलेज मिलता है उससे ज्यादा नॉलेज कहीं नहीं मिलता। Okay. स्टैट ऑडिट में आप यू कैन गेट अ रियली नाइस एक्सपोजर, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है। Hmm. सो वो लाइन ऑफ प्रेफरेंस रखी है अभी, एंड उन्हीं दो फील्ड्स में मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। Great, great. I wish you all the best. And before leaving, a last tip for all the students, like a bonus tip or something like if you made some mistake or something during your preparation, though I think air it was already, but still I always believe there is a chance of improvement for everyone. So like a bonus tip or something you think you could have improved your score as well. So what advice would you like to give? एक बोनस टिप के टाइप में ये कहना चाहूंगा, लाइक बीच में क्या हुआ था ना, जो एक लाइक अगस्त नौ अगस्त सितंबर के अराउंड का जो टाइम था मेरे स्टडी के टाइम पे, Hmm. उस टाइम पे मैंने थोड़ा बैकलॉग एक डेवलप कर लिया था, क्योंकि मैं काफी टाइम से लाइक ट्यूशन नहीं अटेंड कर पा रहा था ड्यू टू Hmm. सम रीजंस। और फिर Okay.
एक दो बार था दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया ट्यूशन के टाइम पे, तो Okay. वो एक बैकलॉग बन के सर पे चढ़ गया था। जीएसटी, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली जीएसटी का जो टॉपिक था, Mm-hmm. एंड तक लाइक अराउंड मार्च पे आके जब मैंने जीएसटी कंप्लीट किया, जबकि मेरे जो ट्यूशन क्लासेस थे उसमें अगस्त नवंबर के टाइम पे जस्ट आफ्टर फाउंडेशन उन्होंने कंप्लीट करा दिया। वो बैकलॉग मार्च तक मेरे साथ था और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैं यही सोचा था कि कर लेंगे, ये वीकेंड आएगा, वीकेंड में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसमें बैठ के कर लेंगे, बट वो बैकलॉग करने का कभी टाइम नहीं मिला। मैं अगर कोई भी देख रहा है उसको बस यही एक अच्छी एडवाइस दूंगा कि बैकलॉग जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता, वो साथ में ही रहेगा। लकीली फॉर मी वो बैकलॉग मैंने कंप्लीट कर लिया, बट कई बार मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके लाइक पेपर के टाइम तक भी वो बैकलॉग उनके साथ था, लाइक वो कंप्लीट कर ही नहीं पाया, वो टॉपिक्स उनको छोड़ के जाना पड़ा इन द पेपर। सो Okay. वैसा किसी के साथ नहीं हो, मैं भी यही चाहूंगा। सो दैट वुड बी अ Great, great. I think great tip from your side that अपना टाइम के साथ टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो so that you will be able to complete your work, your course on time. So a great tip, I would say. Okay. So I think that's all for today. But I won't say that this was our last meet. I would say we'll be meeting again and helping students. And I remember you were saying that you'll be more interested in coming up again. So I would really appreciate if you can spend some time on this. But moreover, I'll add your LinkedIn ID in the comment section so that students can, of course, reach out to you to have more questions to you definitely. directly coming, or they can come to the comment section and we both can give the answers to their queries. So all the students who are watching, I would just say that take some tips. Obviously, no one have a same strategy. No one can have a fixed defined strategy for you, but you can just take some good points from everyone and inculcate for as per your convenience, and then try to achieve your results as per your expectation and your circumstances. So don't just copy someone, but try to take some positive points from them which suits you, and then try to inculcate them. So at the end, thank you, Parv. Thank you so much. It was really great talking to you, and I know you will be rocking a lot in your coming days. I think for air in your CA final also, we'll be having a interview again for Thank that. you. So best wishes for that as well, and hope for the best. Okay, see you soon. Bye bye, everyone. Do See you soon. subscribe our channel. Thank you.